नमस्कार बच्चों, let us start bryophyte group of plant kingdom. So last time we have discussed Thallophyta, different classes of algae. Now bryophytes, they are known as amphibians of plant kingdom. Why? Because they can live in the soil but depend on water for sexual reproduction. So, just like the amphibians, ants who need water for reproduction, and here also, bryophytes, they need water for sexual reproduction, otherwise they live in soil. Two groups included in the bryophytes, liverworts and mosses, present in moist shady areas in the hills. Structure is more differentiated than algae. Still, it is thallus-like, prostrate or erect and attached to the substratum by means of rhizoids. Rhizoids are the root-like structure. They lack true roots, stems or leaves, but may have root-like, stem-like, leaf-like structure. Not true root, stem, leaf, but unki tarah root-like, stem-like, leaf-like structures may be present. The main body is haploid. Haploid means it has single copy of chromosomes. You know, all the higher organism, plants, animals, they are diploid. हमारे हर सेल में क्या होता है? Pair of chromosomes. But this main body is haploid. Then sex organs, they are multicellular. So this is what is an advancement over the previous group, Thallophyta. So इसमें भी differentiation अभी भी नहीं है stem, root, leaf में. Then what is the difference? Here एक तो body slightly more differentiated than algae. Then multicellular sex organs, jacketed multicellular sex organs are present. The male sex organ is called antheridium. It produces antherozoids, that is a biflagellate. तो मेल गमीट को हम कहते हैं antherozoids. They are biflagellate. And female sex organ is flask shaped, and this is archegonium, and it produces a single egg. And both what fertilization occur in the water, and antherozoids are released into water, where they come in contact with the archegonium and fuses with the egg to produce the zygote. A zygote is a diploid structure. It do not undergo reduction division immediately, but it produces again a multicellular body which is known as sporophyte, spore bearing. The sporophyte is not free living, but it is attached to the dependent on the gametophyte. पहले जो मेन बॉडी करें that is a gametophyte है ना, तो उसके ऊपर ही attach रहता है, and it derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce haploid spores. Haploid spores, they germinate to produce the gametophyte. So this is the general life cycle of the bryophytes. Economic importance and mosses, they provide food for many herbaceous mammals, birds and other animals. Some species of this sphagnum, it's a moss, it provides peat that is used as a fuel, and it has high capacity to hold water. It is used by the gardeners for packing and transportation of living materials. तो कुछ plants या कुछ इस तरह से materials को pack करना होता है, they use the moss. Mosses along with the lichens are the first organism to colonize rocks, and hence they are of great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. Mosses, they form dense mats on the soil. They help in soil formation. That is the economic importance. Now two groups are liverworts and mosses. Plant body of a liverwort is thalloid.
dorsiventral and closely appressed to the substrate. Why? Because no vascular tissue is there. See, this is the structure of liverwort. ये बिल्कुल रॉक्स या सॉइल के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये लिवरवर्ट्स का स्ट्रक्चर है, thallus like structure, and this thallus is mostly branched dichotomously, 2 बार बढ़ गया, फिर आगे फिर डिवाइड हो गया। और ये देखो बीच बीच में ये जो है सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियोफोर, ये आर्किगोनियोफोर, वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, है ना, कि वो एक ही थैलस के ऊपर हो रहे हैं दोनों या दोनों अलग अलग थैलस से है। सो लिवरवर्ट्स, द एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज मार्केंशिया, इसमें दोनों अलग अलग, दिस इज अ मेल थैलस, सॉरी फीमेल थैलस आर्किगोनिया, और ये मेल थैलस है, एंड जिसमें एंथ्रीडियोफोर जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आते हैं इस पे लिवरवर्ट्स पे ही दोबारा से वो स्ट्रक्चर दिखाया था। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. Leafy members, they have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. कुछ मेंबर्स लीफी होते हैं बट ज़्यादातर लीफी लिवरवर्ट्स थैलस लाइक है। मॉसेस वाला जो ग्रुप है वो लीफी होता है। Asexual reproduction occurs by fragmentation of thalli or by the formation of special structure called the gemma. Gemma are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gemma cups located on the thalli. Gemma are detached from the parent body and germinate to form the new individual. Just see here. एक तो बेटा ये पहले you see that this is written A is male thallus and B is female thallus. So it is A is a female, archegonia female reproductive structure है और ये antheridia male है, ठीक है। And then these are the gemma. ये क्या है? छोटे छोटे ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और उसके अंदर जेमा दे आर प्रोड्यूस, जेमा कप्स रिसेप्टिकल्स, और इसके बीच बीच में ये जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो जेमा दे आर मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब ये नहीं बनते, अभी सेक्स ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए, तो ये या तो फ्रेगमेंटेशन से टूट जाता है थैलस, इट फॉर्म द न्यू थैलाई, है ना, डिवाइड करते रहते हैं, या फिर ये जेमा कप they form the gemma that also are the means of reproduction. Yeah. They get detached from the parent body and germinate to form the new individual. Sexual reproduction, male and female sex organs are may be produced on the same thallus, और वहाँ पे हमने जो figure में देखा, और on the different thalli. Sporophyte is having capsule. When fused zygote is formed, then sporophyte जो बनता है that is known as, that have a capsule. After meiosis, spores are formed, which again give rise to the gametophyte. Example, Rixia markensia. They are the example of liverworts. Mosses के भी जो मेन बॉडी है दैट इज अ गैमेटोफाइट, गैमीट बियरिंग और हैप्लॉइड कहते हैं। देखो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। गैमेटोफाइट मीन्स गैमीट बियरिंग, वो गैमीट बनाएगा, और प्लस इट इज हैप्लॉइड। और स्पोरोफाइट जो होता है दैट इज डिप्लॉइड। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। एक स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज, ये लीफी, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करता है, प्रोटोनीमा बनाता है, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। इसके बाद सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लिटिल बड. It has upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. ठीक है, सो ये जो मॉसेस है इसमें लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स है ना। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं राइजोइड्स। ज़्यादा बड़े नहीं होते बिकॉज वेस्कुलर टिश्यू इज
absent. Vegetative propagation by fragmentation and budding in the secondary protonema. And sexual reproduction, same naming, sex organs are antheridia and archegonia. They are produced at the apex of leafy shoot. Antheridia from antherozoid, archegonia from egg cell, fuse करते हैं दोनों and they form the zygote and that develops into a sporophyte. अभी यहाँ भी sporophyte क्या, it's not independent, depends upon the gametophyte. इसमें sporophyte consists of food, seta and capsule. Capsule contains the spores which are formed after meiosis or spore germinate to form the gametophyte. ठीक है. So see, ये है हमारा moss का structure. लीफ लाइक है ना, लीव्स लिखा है, इट्स लीफ लाइक, और ये रूट लाइक राइजोइड्स, और ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल. ये पूरा स्पोरोफाइट है. सो इसके मान लो यहीं पे आर्किगोनिया था, उसमें जाइगोट बन गया, अब वो बड़ा होके जर्मिनेट करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट बना गया जिसमें एक स्टॉक है, सीटा इसको हम बोलते हैं, एंड द कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर स्पोर्स, और स्पोर्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, हैप्लॉइड होते हैं, एंड जब ये रिलीज होते हैं दे जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमीटोफाइट. तो वो गैमीटोफाइट फिर बना देते हैं. फिर गैमीटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स आ गए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. सो दैट इज अबाउट द मॉसेस. इन मॉसेस protonema stage is present, but in liverworts protonema stage is not present. Mostly it is thallus like liverworts जो होते हैं, और mosses जो होते हैं they have root like, leaf like, stem like structure. है ना. gemma cups are present in the liverworts, they are not present in the mosses. So that is about the liverworts and mosses. Thank you so much.